So good morning, everyone. Today we are discuss about a digital image fundamentals. What are the objectives? So this unit provide an overview of the image processing system, which include a various elements like image sampling, quantization, basic steps in image processing, and image formation, storage, and display. So after completing this unit, the reader is expected to be familiar with the following concept: sampling, image sensor, different steps in image processing, and image formation. क्या होता है? So digital image fundamental. The feed of digital image processing refers to the processing digital image by means of digital computer. A digital image composed of finite number of elements होता है, each of which has a particular location and value. These elements are called picture elements, image, pals, pixels, जिसे हम बोलते हैं. Pixel in terms of use most widely to denote the elements of digital image. अब image is a two-dimensional function that represent the measures of some characteristics such as brightness or color of viewed scenes. अब कितनी brightness है उस picture में और कैसे हम उस scene को देख सकते हैं. So this is a 3D scene and we have to use a 2D projection system. So we are captured with this camera and sent to the digital image processing, a particular system to focus on the water drops. So whenever we are taking a photograph in early in the morning, we are considering only this water drops on the leaf. So you see this leaf and this gives an output as in this is a processed image. So इस process को हम digital image processing system कहते हैं. ठीक. So an image may be defined as a two-dimensional function, fxy, where x and y are a spatial plane coordinates. Amplitude f at any pair of coordinate, अब उसके x और y है. So intensity of the image at that point terms gray level is used. So intensity of monochrom image, color image क्या है? Two-dimensional. For example, RGB color system. So red, green, blue, individual component for the reason many of the techniques developed for monochrom images. So image may be continuous with respect to x and y coordinate. अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, डिजिटल इमेज कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं. So we have to go with the digital image processing has a very wide applications and almost all the technical fields. So we are in a short term we are writing a DIP. It means digital image processing. So digital image processing has a broad spectrum of applications such as remote sensing by satellite or other spacecraft, image transmission and storage for the business application. आपकी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है, मेडिकल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, रडार सिस्टम के लिए भी, सोनार सिस्टम के लिए भी, एक्यूस्टिक इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी, लाइक अंडर वाटर वी हैव टू फाइंड आउट द हाइड्रो एक्यूस्टिक्स. सो रोबोट्स में भी इसको यूज किया जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पार्ट्स. अब बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पे किस पार्ट में पर्टिकुलर इश्यूज आया है, तो दैट शुड बी नोन बाय द इमेज प्रोसेसिंग. So image acquired by a satellite are useful in tracking of like earth resources क्या है हमारे, geographical mapping कैसे कर सकते हैं, prediction of agriculture crops क्या है, urban growth कैसे है, weather monitoring, flood and fire control, many other environmental applications. Space image applications क्या क्या include कर रही हैं. So we have to recognize analysis like image obtained from deep space probe missions हमें क्या है. What are the image transmission and storage occur जो हम इसमें टेलीविजन में, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में जो फेस स्माइल पहले यूज होती थी इमेजेस, वी हैव टू यूज अ ग्राफिक ऑटोमेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर कैसे हम कर सकते हैं, तो ये सारी फील्ड्स में हम उसको यूज कर रहे हैं. क्लोज सर्किट टेलीविजन बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम क्या है एंड इन मिलिट्री कम्युनिकेशंस में क्या है. सो मेडिकल एप्लीकेशंस में भी हम इमेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं. प्रोसेसिंग ऑफ चेस्ट एक्सरे, आप चेस्ट का कभी एक्सरे लेने जाते हो, साइनोएंजियोग्राम्स, दिस इज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ मेडिकल लाइंस. सो प्रोजेक्शन इमेज ऑफ ट्रांसएक्सियल टोमोग्राफिक एंड मेडिकल इमेज दैट अकर इन रेडियोलॉजीज, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसे हम बोलते हैं NMR, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग आर देयर. फाइन. सो उसमें हम उस चीज को यूज करते हैं. इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स कौन सी? So it is a collection of functions that extend the capability of the MATLAB numeric computing environment. So these functions and their expensiveness of the MATLAB language make many image processing operations easy to write. अब ideal software we have to use a image processing problems के लिए. So this is a network components. So image display कैसे होती है कंप्यूटर्स पे,
मास स्टोरेज है, हार्ड कॉपी, स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, इमेज सेंसर, वी आर डिस्कसिंग इट. So we call it as a DIP. DIP means digital image processing. First is image sensor. So with the reference to sensing, two elements are required to acquire a digital image. दो elements चाहिए. The first is a physical device that is sensitive to the energy radiated. अब we wish to image. Second is specialized image processing hardware. एक simple और एक specialized है उस image को करने के लिए. It consists of digitizer just mentioned the plus hardware to perform other primitive operations like arithmetic logic units, arithmetic additions. हम उनकी हेल्प से इसको पैरेलल इमेज करते हैं. नेक्स्ट है कंप्यूटर. क्या होता है? इट इज इन अ जनरल पर्पस. कंप्यूटर कैन रेंज फ्रॉम पीसी टू सुपर कंप्यूटर. इट्स डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस. अब डेडिकेटेड एप्लीकेशंस आर समटाइम्स स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर हम यूज करते हैं to require a level of performance softwares. So it consists of specialized modules that perform a specific task. A well-designed packages also include capability of the user to write a code. As a minimum, utilize the specialized module. More sophisticated software packages we have to use in its, like you have to in these days very common. आपके पास बहुत सारी apps हैं जिसमें आप image को बहुत refine कर देते हो या उसके कोड में चेंज आपके पास नहीं है, बट आप उसको रिफाइनमेंट करने का ऑप्शन आपके पास होती है. मास स्टोरेज, मस्ट इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एंड इमेज इज अ साइज 1024 बाय 1024 पिक्सेल्स. तो एक ये इमेज का एक साइज है. 8 बिट क्वांटिटी रिक्वायर्स अ 1 मेगाबाइट. अगर आपको 8 बिट क्वांटिटी की चाहिए तो 1 मेगाबाइट एमबी साइज होता है उसका. फाइन. तो इमेज इज नॉट कंप्रेस्ड. कई लोग सोचते हैं इमेज कंप्रेस्ड होती है. नहीं जी, इमेज नहीं कंप्रेस्ड होती. So image processing application falls into three principles: short-term storage, that is during processing; online storage, that is relatively fast retrieval. Fine. So next is that we have to storage such as magnetic tape on a disk. Fine. So image display क्या है? Image display is used today are mainly color TV monitors. These monitors are driven by output of image. आपका ग्राफिक डिस्प्ले हो रहा है कार्ड के ऊपर, इंटरनल पार्ट के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम पे. हार्ड कॉपी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, लाइक यू हैव टू से इट्स योर लेजर प्रिंटर आउटपुट, फिल्म कैमरा, हीट सेंसिटिव डिवाइस, इंकजेट यूनिट्स क्या है, सीडी रोम्स, डिस्क, पॉसिबल रेजोल्यूशंस क्या है. नेटवर्किंग में यूज हो रहा है डिफॉल्ट फंक्शन फाइंड करना, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. तो वी हैव टू यूज इमेज प्रोसेसिंग. व्हाट इज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ? तो लोगों को इस चीज का ही नहीं पता लग रहा कि हाउ मच वी हैव टू यूज इट. सो अगेन इमेज प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर दैट पर्पसेस. सो व्हाट आर द फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? So basically there are two categories we have to use in a digital image processing. So method whose output are input are image. Method whose outputs are input are images. Fine. So method whose outputs are attribute extracted from those images. ठीक है जी. अब इसको एक एक पॉइंट को मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ. तो फंडामेंटल स्टेप क्या है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड गो थ्रू इट. तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग समझना तो बस इसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले फर्स्ट होता है इमेज एक्चुअलाइजेशन. क्या होता है? इट कुड बी सिंपल बीइंग गिवन एन इमेज दैट इज ऑलरेडी इन अ डिजिटल फॉर्म. आपके पास एक इमेज है वो डिजिटल फॉर्म में. तो जनरली द इमेज एक्चुअलाइजेशन स्टेज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग सच एज स्केलिंग. तो सबसे पहले हम स्केलिंग कंडीशन पे आते हैं. ठीक है जी. तो वी आर गोइंग इनटू स्केलिंग कंडीशन. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग क्या होता है? फाइन. सो यू शुड नो द ईच वर्ड इन द स्केलिंग. स्केलिंग किस में यूज हो रहे हैं? तो स्केलिंग इज व्हेन यूर सपोज कीजिए आप किसी चीज पे आसपास जो भी अनरिक्वायर्ड पार्ट है उसको आप रिमूव कर देते हो. दैट इज नोन एज स्केलिंग. फाइन. सो फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए, मैं आपको देता हूँ. जैसे सपोज देयर इज अननोन ग्रास दैट शुड बी नियर योर फ्लावर, यू कैन रिमूव इट. सो इन अ कंप्यूटर ग्राफिक डिजिटल imaging scaling refers to a we would like to say resizing of digital image. उसको दोबारा से रीसाइज करना उस इमेज को. फाइन. सो वी हैव upscaling resolution enhancement. So why we have to use this scaling? Scaling क्यों यूज करते हैं? Scaling is used basically change the visual appearance. हम किसी चीज की visual appearance change करते हैं. मान लीजिए आप स्क्रीन का आप सेट करना चाहते हो हाफ,
या मिडल या मीडियम या उसको कोई भी रिसाइजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्केलिंग वर्ड यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इमेज इन्हांसमेंट. It's along with the simplest, most appealing area of the digital image processing. So we have to idea behind that is obscured. We are simply highlight a certain feature. कोई certain features को हम highlight करना चाहते हैं. That known as the image enhancement. It's a very subjective area of image processing. Fine. Next is image restoration. It deals with improving the appearance of an image. It is an objective approach in the sense that restoration technique tends to be based on a mathematical or probabilistic model of image processing. Enhancement, on other hand, is based on human subjective preference. So regard that constitute a good enhancement results. So this is the image, this is the enhancement image. So color image processing is also required. It's an area being gaining importance. कि डिजिटल इमेज में हम क्या इंटरनेट पे कलर इमेजेस को यूज कर रहे हैं. बेसिकली कलर मॉडल इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. अब जो चेंज ओवर आ रहा है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कलर इमेज प्रोसेसिंग आ रही है. सो वेवलेट एंड मल्टी रेजोल्यूशन आर आल्सो प्रोसेसिंग. सो फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इमेज इन अ वेरियस डिग्री ऑफ द रेजोल्यूशन. So that is we have a word using that is said to be a wavelet. So that wavelet is basically used in a digital image processing, and we are using a multi-resolution. So wavelet is basically a wave like oscillation. कोई चीज वेव की तरह जैसे वेव ऊपर नीचे जाती है, मूव करती है. We are using this type of technique like a zero, increase, फिर decrease, फिर zero, up, no. So this is said to be a wavelet. Fine. Then next is a compression. It deals with the technique of reducing the storage required to save an image or the bandwidth required to transmit it over the network. So lossless compression, lossy compression, these are two types of compression we are using for the image. So next is morphological processing. You can see here, this is a morphological word we have to use. This is said to be a morphological processing. क्या होता है morphological? So morphological, it deals with the tools for extracting an image. वो tools जिसकी image से हम image को extract करते हैं component में से, that represent description of shape, boundary of objects. It's major used in automated inspection applications के लिए. Fine. तो हम उस चीज के लिए use करते हैं. अब morphologically people are using it. If you are used the word that is said to be a morphological processing, so that should be used in a study of the word that we have to relationship with the other. अगर हम इसको लेके चलते हैं कि बाकियों के साथ इसका क्या रिलेशन है. Morphological we would like to say in an image we are use it. इसका एक image का linked कैसे होता है. For example के लिए मैं आपको बताता हूँ. We are using a pixel. Your pixel in the form of box 101010 something like that. So जब वो pixels add करते हैं या remove करते हैं image में से, कोई pixel हमने add किया image में या कोई remove किया उस image में से, that particular structure we have to use correlation with that. This is said to be a morphological digital processing. अब क्वेश्चन ये होता है कि morphological की भी जरूरत क्या है? What is the use? Morphologically, opening is useful for removing small objects. छोटे-छोटे जो objects होते हैं हम उनको remove कर देते हैं while preserving the shape and size of larger object. बड़े से object की अगर shape और size को हमें maintain करना है तो हम उस चीज को remove करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए image में से this is small जो dots हैं, इनको remove करके इस image को हम create कर रहे हैं. This process is known as a morphologically. Fine. So next is representation and description. It's always follow the output of segmentation step, that is a raw pixel data constituting either the boundary of an image or point in the region itself. In either case, converting the data or form suitable for computer processing is necessary. Recognition क्या है? It is a process that assign label to an object based on its descriptors. So it is the last step of image processing, which are artificial intelligence of the software. अब knowledge base क्या है? Knowledge about the problem domain is coded into an image processing system. So the knowledge may be a simple or detailing region or information the interest of the located. अब limiting search है, conducting seeking information. Knowledge base also can be quite complex, such as interrelated list of major possibles. So हम उन सब database को आपस में link लेते हैं. जैसे suppose करो resolution of satellite image. So we have to detection of particular application. हम उसको search कर रहे हैं.
Fine. So next is a simple image model. क्या होता है? So we are discuss about a simple image model. Before that, you can see we are discuss. This is a image acquisition, image enhancement, image restoration. Then that is a wavelet multiple processing, color imaging, wavelet multiple processing, compression, morphologically, fine, and description, recognition. We have to use a description, recognition, and next is sample and quantization. So there is a word one set is the segmentation. We are dividing the images into a sub parts. As per our requirement, we have segmented the images as per our need. Fine. So we are moving towards the next part, that is a simple image model. So an image is denoted by two-dimensional functions. Form होता है xy, value or amplitude of f is a spatial coordinates. Now the word that is again most important, that is said to be a spatial. So what is a spatial image? Spatial processing, spatial image processing. These are various words we are going through in upcoming lectures. What is a spatial image? So spatial basically enhancement in a mathematical processing. इसमें क्या होता है? Image pixel data to emphasize a spatial relation that the process define homogeneous region based on linear edge. So spatial enhancement involves the enhancement of either low or high frequency of information. Fine. So spatial filter क्या होता है? Spatial filter in image processing is used to directly on the pixels जो हमारे हैं. Mask is moved on the image such as mask covers all image pixels. So which is a better? अगर हम लेने जाएं spatial domain लेंगे या frequency domain जो आगे आएगा आपके पास. तो आप जब भी कभी spatial domain के बारे में, so basically in a spatial domain we deal with images. So value of the pixel, the image change with the respect to scenes. Whereas in a frequency domain, we deal with the rate at which the pixel value are charging. So it means we have to use a spatial domain. Okay. So next we are discuss about a spatial images. So इस image donate में हमने two dimensional image लिया जिसमें हमने spatial coordinates ले लिया x y. उसके बाद उनको non zero करके we have to consider as a minimum to maximum, and then we are defining a grayscale images. Fine. So sampling and quantization means digitalizing the coordinate value is called sampling. So we have to use with the quantization. There is a continuous in the image. So location of each sample is given by a vertical tick back marks. So sample are shown on the block. Fine. So this is said to be, we can divide a gray level scale into a 8 discretes. So assignment it's made depending upon the vertical proximity of it. So this is an digital image definition. You can go through it. This is a low level process, middle, high level processing. Representative of a digital images क्या होता है? So we have the result of sampling a quantization matrix real number. So हमने xy ले लिया, रो के लिए mn ले लिया, ये हमने dimensional दिए थे, coordinate 0 0 होते हैं हमेशा ही, एकदम सेंट्रल कोऑर्डिनेट ले लिया. xy एक प्लेन है, व्यूड किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट है zi zj. फाइन. सो दिस इज अ ग्रे लेवल xy digital image. If gray level we have to choose a real number, so we have to specify a coordinate xy. So this is L is equal to 2k power. So digital image acquisition, so spatial and gray level of resolution. So spatial resolution is the smallest discriminable details are in the image. So suppose we have to use this all. So between the width and linear line pair consists of. So we have to use, there is a 1/2 W line pair. We have to specify the resolution. So there is a one new word that is said to be a gray level resolution, refer to the smallest discriminable change in the gray level. अब आपके पास एक false contouring आता है word. So what is this word means? Contouring. So basically the word we have to use that is in the form of digital image processing. So the contouring means you are watching some face. Like contouring is a makeup, so you have to use that type of. आप किसी image को बहुत अच्छा बनाने के लिए you are using a cosmetic images, like you have to enhance, sculpt, structure. किसी का face थोड़ा सा खराब हो जाए तो उसको क्या करते हैं?
they are using a contouring system. Fine. जो problematic area होता है, false area होता है, उसको अच्छे से वो cover up कर देते हैं. Like you have to use a powder system and anything else. But here we are not using any powder. We are using a contouring system. Fine. So image sensing we are using here. Acquisition method. So the type of image in which we are interested are generated by the combination of illuminations. So source and reflection absorptions that we have to use here in it. Okay, guys. So